बचपन में हमारी गुजराती टेक्स्ट बुक में एक स्टोरी हुआ करती थी, दूध माँ साकर। उसमें ये बताया था कि कैसे जब फारसीज अपने होमलैंड फारस को मजबूरन छोड़कर गुजरात के शोर्स पर आसरा लेने आए थे, तो यहाँ के राजा ने उन्हें एक दूध से भरा घड़ा भेजा था, ये बताने के लिए कि मेरा राज्य ऑलरेडी ऊपर तक फुल है, इसमें आपके आने की जगह शायद नहीं है, आपके आने से स्पिल ओवर हो सकता है, यानी मेरे सब्जेक्ट्स में खलबली मच सकती है। उन बुद्धिमान फारसीज ने दूध में शक्कर मिलाकर भेज दी, ये दिखाने के लिए कि जैसे दूध में चीनी मिल जाती है, वैसे ही हम भी यहाँ ऐसे मिलजुल कर रहेंगे कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इस तरह से सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट्स के मिलने से इंडिया के कल्चरल मेल्टिंग पॉट में 2 लोग, 2 कल्चर्स और 2 रिलीजन्स की एक ही हिस्टोरिकल रेसिपी का इजाद हुआ। मैं आपको ये क्यों बता रही हूँ? क्योंकि आज हम फूड से हमारे रिश्ते की बात करेंगे, खासकर फूड फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इट्स जर्नी इन रिगार्ड टू फूड टैबूज एंड रिलीजियस गाइडलाइंस। अलग अलग धर्मों में खाने को लेकर कौन से निषेध और निर्देश हैं और आज के टाइम्स में इनका क्या अब भी रेलेवेंस है। और इस खास टॉपिक पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं उतनी ही खास पर्सनालिटी, डॉक्टर कुरुश दलाल। डॉक्टर कुरुश एक आर्कियोलॉजिस्ट, हिस्टोरियन और culinary एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं। एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री और आर्कियोलॉजी में एक्सपर्टीज के थ्रू इन्होंने कई एकेडमिक रोल्स फुलफिल किए हैं। ये एक आर्कियोलॉजिकल और culinary म्यूजियम कंसल्टेंट हैं और इंस्टीट्यूशन स्कूल ऑफ आर्कियोलॉजी के डायरेक्टर। लेकिन हमारे लिए इनकी लाइफ का सबसे इंटरेस्टिंग एंगल है कि इन्हें वारसे में, इनहेरिटेंस में अपनी मॉम का केटरिंग बिजनेस मिला, और मैं अंदाजा लगा रही हूँ कि उसी से शायद इनका फूड रिसर्च से लव अफेयर शुरू हुआ। ये 10 साल से culinary एंथ्रोपोलॉजी, जो फूड और ह्यूमन लाइफ के रिलेशनशिप की स्टडी है, उसमें वर्क कर रहे हैं। और ये स्टडीइंग फूड वर्कशॉप्स भी कंडक्ट करते हैं, जिसमें फूड के बारे में आर्कियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, मीडिया, एथिक्स, राइटिंग, रिलीजन, माइथोलॉजी और फिलॉसफी, इन सब एस्पेक्ट से एजुकेट किया जाता है। सो आफ्टर दिस माउथ वाटरिंग इंट्रोडक्शन, आई वांट टू रीच आउट एंड वेलकम डॉक्टर कुरुश टू विस्परिंग विजडम। हेलो, नमस्ते। मैं हूं मोनल जैन और आप सुन रहे हैं मेरा पॉडकास्ट विस्परिंग विजडम, जिसमें हम लाइफ को थोड़ा बारीकी से समझकर उसे और भी खूबसूरत बनाने की कोशिश करते हैं। विस्परिंग विजडम के इस एपिसोड में मैं आप सबको वेलकम करती हूँ। हाय कुरुश, वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच मोनल, इट्स सच अ जॉय टू बी हियर। आपने हमें बुलाया और हमें इतनी इज्जत दी, तो आपका बड़ा धन्यवाद है। आपसे हमें इतना कुछ सीखने को मिलेगा। आई एम सो एक्साइटेड एंड सो हैप्पी फॉर दिस। थैंक यू फॉर एक्सेप्टिंग टू बी ऑन विस्परिंग विजडम। एब्सोल्यूट प्लेजर। So let's dive in. चलो। कुरुश, food as we all know is energy, लेकिन इंसानों के लिए ये सिर्फ एक सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन नहीं है, हमारा एक गहरा रिश्ता है हमारे खाने से। I'd like to know why does food stir up so many emotions? And personally, आपको किस चीज ने इंस्पायर किया इसे फॉर्मली स्टडी करने के लिए? उफ, बस इसका आंसर देते देते ही पूरा पॉडकास्ट खत्म हो गया। तो मोनली ऐसा है ना कि I grew up in a household. My father was out at sea. He was a merchant navy officer. My mother was a PhD in archaeology. Oh. And she was told कि औरतों की जगह नहीं है इसमें, औरतों की काबिलियत नहीं है, they are very weak and delicate, तो वो कर नहीं पाएंगे। So to prove them wrong, she worked on the Indo-Pakistan border in northern Rajasthan in those days. Oh, wow. To do her research, conducted her own excavation and showed up the world कि जो कोई आदमी कर सकता है, औरत दुगना कर सकती है। Absolutely. So I came from a very strong anti-misogynistic family that way. My father firmly behind my mother whenever she needed anybody to support her. Mm-hmm. And she finished her PhD. They still wouldn't give her any jobs in archaeology. She came back to Bombay and quite by accident, I mean, it sounds ridiculous, but quite by accident, she fell into catering.
अच्छा। It had to do to some extent के क्या हुआ था, पिताजी के साथ वो हनीमून में शिप पे गए थे, तो उन्हें बहुत सारे इंटरेस्टिंग नए फूड्स ट्राई करने मिले। फिर उसके बाद भी हमने 2 ट्रिप साथ में किए जब मैं छोटा था, तो हमारे horizons expand हो गए। It's not that their food is better or our food is bad. It's not like that. It is just that it is different. It is new, and yet it is same. True. And all of these things came together, you know. So my mother became a caterer, and I grew up with both archaeology, history, and catering on the other side. तो उसका जो मिलाप हुआ, मैंने भी डिसीजन ले ली कि मैं आर्कियोलॉजिस्ट बनूंगा। जाके मैंने आर्कियोलॉजी की, पीएचडी की, और पीएचडी करते करते मुझे भी ये महसूस हुआ, इसका एहसास हुआ कि ये लाइन में हमारे लिए कोई नौकरी नहीं थी। तो चलो, माँ ने कहा अभी आई वांट टू रेस्ट, बहुत हो गया, आई वांट टू राइट। तो मैंने उठा लिया चमचा और कढ़ाई। 98 में आई स्टार्टेड बिजनेस इन माय नेम व्हाइल फिनिशिंग पीएचडी and didn't look back. So it's ultimately her business, it's not my business. I have just kept it, you know, oiled the wheels and kept it going. So I loved the history, archaeology aspect and the food aspect. Doing both, मतलब तो उसका मिलाप होना ही है। Yes. और मेरी बीवी ने कहा एक दिन कि आर्कियोलॉजी और फूड को ज्वाइन क्यों नहीं करते? You know, you always think that your wife is biased because she loves you too much. साइज रहने नहीं, ये कौन करेगा। और हमारे एक मित्र थे, उनका फूड स्टूडियो था, तो उन्होंने कहा ये करते हैं। मैंने कहा नहीं, मुझे ये नहीं करना, ये बहुत कठिन काम है और मैं बहुत लेजी आदमी हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है, ऐसा करते हैं कि एक लंच करते हैं, जहाँ हमारे पूर्वज कैसे खाते थे वैसे अलग अलग डिशेस करते हैं। तो एक हड़प्पा संस्कृति के लोग क्या खाते थे ऐसा एक डिश, एक अशोक मौर्य क्या खाता था, सम्राट अशोक, एक ऐसा डिश। तो फिर एक चोला एम्पायर में क्या खाते थे ऐसा डिश। मतलब ये इंटरेस्टिंग है। 7-8 डिशेस हमने डेवलप किए, लंच ऑर्गेनाइज किया, टिकट्स बिक गए। एक हफ्ते पहले उन्होंने मुझे कहा कि ऐसा है ना कुरुश की वी हैव अनाउंस कि तुम आर्कियोलॉजी फूड के 1 घंटे का भाषण देने वाले हो, उसके बाद लंच। कहा क्या पागल हो गए? तो उन्होंने कहा नहीं अभी हो गया, टिकट्स बिक गई। मुझे लगा अभी क्या करना है, कुछ नहीं, तो गूगल भैया है, गूगल भैया के पास सब आंसर्स होते हैं। तो सोमवार की सुबह थी, रविवार को भाषण देना था, लंच खाना था, और आधा सोमवार निकल गया और गूगल पे ऊपर आर्कियोलॉजी ऑफ फूड इन इंडिया पे कुछ ही नहीं था। आर्कियोलॉजी ऑफ फूड पे ही बहुत कम चीजें थी। आई हैड अ कंप्लीट मेल्टडाउन, अब क्या होगा? फुल पिटी पार्टी। दूसरे दिन सुबह उठ के कहा भाई तुमने इतने साल आर्कियोलॉजी किया है ना, चलो बैठो, पेन पेपर लो, आर्कियोलॉजी ऑफ फूड में क्या क्या होना चाहिए। एंड आई रियलाइज मनोल के इट वाज ऑल देयर, इट वाज नॉट लाइक इट वाज नॉट देयर। किसी ने उसको फूड जैसे होलिस्टिकली नहीं देखा था। आर्कियोजोलॉजी टू स्टडी एनिमल रिमेन्स, पैलियोबॉटनी टू स्टडी प्लांट रिमेन्स, ceramic studies to study pottery. So it was all broken up like that in different verticals. किसी ने भी ये सब verticals कभी साथ में लाए नहीं थे। Right. यह लेक्चर, वो पीपीटी आज भी मेरे पास है, मुझे याद दिलाने के लिए कि कितना घटिया काम था वो। और all these years later, sometimes I still visit it just to remind myself that you know everybody has feet of clay and humble beginnings. Yes, and this is where it all started. Yeah, so that's how it started, and well, didn't look back after that. Wow, so interesting. I think happy accidents ना life के सबसे cherished memories देते हैं। चल यार, क्या है ना मनोज जी के हमारे समय में हम बड़े नसीब वाले थे कि हमारे माताजी पिताजी ने ऐसे नहीं कहा कि तुम्हें लॉयर बनना है या आर्किटेक्ट बनना है या डॉक्टर बनना है, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं था। उन्होंने कहा तुम्हें क्या बनना है। ये सबसे बड़ी प्रिविलेज है लाइफ में, एक बहुत ही बड़ी प्रिविलेज है। एंड आई रियलाइज्ड दैट आई वाज वेरी प्रिविलेज्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल आई केम फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली, दैट इज इटसेल्फ अ प्रिविलेज, बिकॉज़ गरीब लोगों को इंडिया में बहुत कम चॉइसेस होते हैं। एंड फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिली नॉट हैविंग द एस्पिरेशन के मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, यू नो दैट काइंड ऑफ थिंग। एंड आई हैव सीन मेनी लाइव्स रूइंड लाइक दैट, कि जिसे डॉक्टर नहीं बनना था उसने वो डॉक्टर बन के बेचारा बैठा है और आगे रास्ते में फेल हो गया, इंजीनियरिंग कॉलेज जाके उसको मेंटल ब्रेकडाउन हो गया। ऐसा होता है because this is not what you want to do, but you want to make your parents happy, and you know you keep feeling that you will be a failure. How will you deal with failure? ये बहुत ही सीरियस बात है।
और हमारे पास काफी हमारे स्टूडेंट्स आते हैं ऐसे कि माँ को मैं क्या समझाऊं, तो मैंने कहा कि माँ को तुम्हें समझाना तो यहाँ लेके आओ, मैं उनसे बात करता हूँ चाहिए तो। एंड आई हैव हैड पेरेंट्स गेट वेरी अपसेट, अरे इतने साल हमने इन्वेस्ट किया, इतने फीस हमने भरे, अब उसका क्या होगा? तो मैंने कहा कि आपने बच्चे को पूछा था क्या, उसकी चॉइस क्या थी? You know, because this we seldom think of these things. So I had that freedom, and I made the most of it. But my life has also been, चलो ये रास्ते निकल गए, कहाँ जाता है वो मोड़ आ गया, चलो लेफ्ट साइड निकल गए, चलो अगले बार राइट साइड निकल गए. So my life has been a life of discovery, and I have very few regrets. I will not say this nonsense कि I have no regrets. वो दो nonsense बात है. सही बात है. It's only idealistic. It's not realistic. It's an absolute lie. झूठ है कि I have no regrets. Yes, I have regrets, but they are few, and I've gotten over most of them, and I've gotten on beyond that. तो जब दुख होता है, सदमा पहुंचता है, तो you feel bad. But your job is to pick yourself up and start walking again. And as long as you can pick yourself up, you will never remain behind in the walk of life. You will always go ahead. Pace might change, but only you can stop yourself. Yes. कुरुश, दुनिया के मेजर रिलीजन्स में इतना फोकस फूड के रूल्स बनाने पर क्यों रहा है? जैसे जुडाइज्म में कोशर, इस्लाम में हलाल फूड, और जैनिज्म में नो रूट वेजिटेबल्स एंड अदर रूल्स. वैष्णवाइट्स स्पेशली गुजरात, राजस्थान, पंजाब में मीट और सी फूड नहीं खाते, एंड सम ऑफ देम डोंट इवन ईट अनियन गार्लिक. और इतने सारे लोग इन्हें फॉलो करते आ रहे हैं, तो फूड का रिलीजन से क्या कनेक्शन है? ओके, तो इसका जो आंसर है वो शायद आपको अच्छा नहीं लगेगा या आपके लिसनर्स को, बट इसकी सच बात ऐसे है कि रिलीजन कंट्रोल करता है पॉपुलेशन को. इसमें दो चीजें हो सकती है, या तो भलाई हो सकती है पॉपुलेशन की, या तो मैनिपुलेशन. तो मैनिपुलेशन है ही है. अब पहली बात ऐसी है कि आपके लिए कुछ अच्छा है और आपको कहा जाए कि तुम्हारे लिए अच्छा है, तो तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि तुम ऐसा करते नहीं. मगर आपको कहा जाए भगवान ने कहा है कि ऐसा ही करना है, तो ऑटोमेटिकली वो डर होता है भगवान का. राइट. अरे क्या मालूम, सचमुच में भगवान ने ऐसे कहा होगा और मैंने किया तो फिर उसका परिणाम क्या होगा? तो दैट इज द रूट बिहाइंड इट. सो सैडली फॉर अस टुडे ऑल आवर रिलीजन्स रूल बाय फियर. देयर इज ऑलवेज फियर कि तुमने ये नहीं किया तो वो होगा. There is no really truly benevolent deity कि भगवान तुम्हें प्यार करता है और तुमने जितनी भी भूल की वो तुम्हें माफ करेगा. Religions might say it, Christianity tries to say it, but still there is sin and there is what you can do and what you can't do, and all of the religions have that. So religion basically is an extension of society, morality. Sometimes spirituality is part of it, sometimes it's not. And see, there is very little difference between kosher and haram. What most people don't realize who are not Jews and not Muslims is kosher is in all walks of life. Haram and halal, which are the two options, are in all parts of life. It is not just about your food. आप जो पहनते हैं, जैसे घर में रहते हैं, जैसे ट्रैवल करते हैं, कौन से एनिमल्स रखते हैं, all of that. So all the aspects in life are governed by the rules of kashrut if you are a Jew, and haram and halal if you are. So, you know, for example, the word harim, हम कहते हैं, अरे, everybody gets titillated and thinks of a room full of half-naked women that, you know, you can't go to and only have one master and all that. This is nonsense. The word harim comes from the word haram. Yes. That to see the wives of another man is haram. So same thing. So now look, for example, the case of the pig. In both Judaism and Islam, the eating of the pig is proscribed. It's also actually proscribed for Christians. Because Judaism, Christianity and Islam are actually one religion, one Abrahamic religion with, you know, its minor variations coming out of it. Of course, Jews, Christians and Muslims will all hate me for saying this. But it's true. They all look up to the same lineage of prophets, and at some point there are bifurcations. So the basic tenets are the same. The Christians have found a very interesting way of getting around them. What happens is in a very hot desert environment, when you butcher an animal, you can't sell the animal immediately. It takes time. आप वेजिटेरियन है, शायद आपको एक्सपीरियंस नहीं होगा, बट सुबह को आप जब जानवर काट के लगा देते हैं बेचने के लिए, आधा बिक जाता है, फिर बाकी लोग दोपहर को या शाम को आते लेने, तो आप गीला कपड़ा लगा के रखते हो उसे.
हाँ, तो अब क्या है ना कि ब्लड जो होता है, ब्लड इज मेड ऑफ मोर देन 400 डिफरेंट केमिकल्स. व्हेन you die, your blood starts breaking down immediately, and it turns to poisonous compounds. Right. I'm keeping this very simple, no? तो बहुत ही टेक्निकल कॉम्प्लेक्स चीज. Yes, I agree. तो जो गोश्त होता है, जो मीट ईटर्स जो गोश्त खाते हैं, वो खराब हो जाता है, वो पॉइजन हो जाता है, आपको इंडिकेशन वगैरह हो जाएगा, फूड पॉइजनिंग हो जाएगा. तो you want to bleed the animal to death, so that there is no blood left in the body. Now you can't do this to a pig. अच्छा. पिग का जो जगुलर वेन होता है वो बहुत डीप होता है. अच्छा. उसके ऊपर काफी सारा फैट होता है, तो आपको करवट लेके ढूंढना पड़ेगा कि वो कहाँ है. दैट इज रॉन्ग. नो, द आइडिया इज इस्लाम एंड जुडाइज्म आल्सो टू ब्रिंग एज लेस पेन एज पॉसिबल टू द एनिमल, थैंक द एनिमल फॉर इट्स सैक्रिफाइस टू फीड यू. सो दिस इज व्हाई, अब हाउ टू टेल पीपल नॉट टू ईट पोर्क. पोर्क इज अ डिलीशियस मीट. सो प्रिस्क्रिप्शन बाय गॉड. Right. God says you can't eat this. God says you can eat that. God says इसके साथ वो नहीं चलेगा. And sometimes it gets a little carried away. But you know, in Islam, there are a lot of staunch Muslims who will not eat shellfish. अच्छा. In seafood. So you're like, अरे उससे क्या होगा? Because shellfish spoils very easily in the again. So all of this is, there is some practicality behind. Now today, with the cold chain and refrigeration and freezers, this doesn't matter. राइट. बट क्या है ना, वो एक आदत सी पड़ गई है, तो आप चेंज नहीं कर सकते. आप जैनिज्म को अगर देखेंगे तो जैनिज्म व्हेन इट केम अबाउट वाज ए ह्यूज रेवोल्यूशन नो अगेंस्ट द सिस्टम दैट एग्जिस्टेड एट दैट टाइम, व्हिच यू नो पीपल लाइक टू कॉल हिंदुइज्म, बट इज ब्राह्मणिज्म बेसिकली. तो उसका एक चैलेंज था. सो दे वर डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट वर अगेंस्ट व्हाट द पीपल इन ब्राह्मणिज्म वाज डूइंग. सो जैनिज्म, ऑफ कोर्स जैनिज्म, बुद्धिज्म और जैविकिज्म, these are all contemporaries. But Jainism had 5 pillars as opposed to 4 pillars in Buddhism. To make it very simple, where ahimsa was compulsory. Now again, most people who are not Jains don't understand what it's all about. So the point here is that there is dosha, and you collect dosha in your life. And the more dosha you collect, the more problems you have, and you need to be reborn to atone for your dosha. It's not like there is no dosha in eating plants. It's not like there is no dosha in eating grain. There is. The difference is there is less dosha and more dosha. In taking of animal life, there is much more dosha than in eating grain and plant life. So therefore, to minimize your dosha, you are vegetarian. And because things that grow under the ground need to be uprooted and not just cut off. Okay? Therefore, it is even more damage that you'll be doing to life that lives under the ground, and therefore that is forbidden. The onion garlic thing is a totally different game. अच्छा. You know, we club it together and say, ये सब साथ में है. साथ में. Taboos. But they are not combined food taboos. अच्छा. Yeah, it is a very distributed problem. There is one set of taboos because of this reason, there is one set of taboos because of that. Okay. So whilst onion garlic also grow under the ground, the onion garlic taboo, which is a very North Indian taboo in many ways, has to do with a lot of Ayurvedic thinking, which has been kind of misinterpreted. So Ayurveda says that all foods are heating or cooling, and that you need to live a life of balance. See, the sensible thing in Ayurveda is that balance. Ayurveda says there are 3 doshas, Vata, Pitta, Kapha, and all your Vata, Pitta and Kapha need to be balanced. Yes. Then you are okay. If even one is out, then you are ill. So, you know, you might call the disease whatever you want to call it, but it is because of the imbalance in your doshas. So, the foods that you eat, because this is holistic healing, the foods that you eat are very, very critical to this. So, if your vata is bad, then you shouldn't eat this, you should eat that, and so on and so forth. So, Ayurveda categorizes food into Rajasic, Tamasic, and Sattvic. Sattvic, yes. So what it says is basically that how you live is what kind of food you need. It's not one is bad and one is good. So basically to say that those who are Brahmins and who are spending most of their time indoors, and those who are business people and spend their time indoors again, they do not require food that invigorates them in the way that say soldiers do, kings do. High energy foods basically. Yeah, so
high energy foods are what technically you would suppose soldiers would need. So therefore, a rajasic diet with meat. A tamasic diet, on the other hand, is the high carbohydrate, high meat diet, which farm workers will need. Okay? Exactly. And things like that. So what happens is then, because food is aspirational, if you have a caste system where on the top there are Brahmins, and Brahmins are eating one kind of food, then everybody says, I also want to eat that kind of food. We don't realize very often that a truly vegetarian diet, which is properly balanced, is a huge privilege. Huge privilege. We eat vegetarian, so we are, and there is this, belief that we are more spiritual because you are vegetarian. Arey bhai, the great sage Yajnavalkya, in the Yajnavalkya Smriti says, I love eating beef, especially if it is tender and cooked well. So Manu in the Manu Smriti says, and much reviled misogynistic Manu says, if the prasadam is beef, and if the Brahmana refuses to eat it, he will be born as pinworms in shit for 20,000 generations. Now, I'm not telling anybody to eat beef or not to eat beef. That was what was prevalent then. Society changes. Societal mores change. Right. To me, the shift from meat to milk is a very sensible shift because of the circumstances of that time. In northern India, as populations were increasing rapidly, there was a serious problem of dearth of land. You could either have land for charai or you could have land for farming. Right. You could not have both. So you needed to cut down your meat eating, and you needed certain vitamins that only come from milk. Vitamin B, vitamin B12, vitamin B6, B9. I mean, it's not that plants don't have them, but they have them in such meager amounts that it's ridiculous. So your option is to have an animal food. Right. So milk becomes that option. Ghee is one of the greatest sources of vitamin B9 in the world. Acha. Yeah. And it is because it is an animal product. There is no tree from which cow milk comes. And coconut milk might look and feel like milk, but it doesn't do the same thing for you that cow milk does. And similarly, oat milk, soy milk, blah, 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 blah. Yes. So those who want to do it, fine. Vegans, if they're sensible, need to take supplements because they don't get their required mineral content. They don't get their required vitamin content from the diet that they choose. So again, it is a choice of great privilege to be able to do this. Right. And most people don't realize this. And then, we try to promulgate and propagate ideas which are half-baked. You have the Academy of WhatsApp and the University of Facebook. अभी 30 टाइम तुम्हें वही मैसेज आया तो then you say कि सच होगा ही होगा भाई. हाँ, वो belief system में ingrain हो जाता है. And that is also human feeling, no? कि होगा. See, there are lots of things that happen like this. It's not just about food. I'll give you an example. Bombay has something called Bombay Castle, which has a beautiful gate, which is all that is left of the Portuguese period. Achha. When there used to be a Portuguese manor house there. Okay. It was later expanded into Bombay Castle, which is behind your Asiatic Society. Okay. It's inside the Navy just now. A beautiful little four-cornered fort. But the gateway is still the original Portuguese gateway. Okay. Above the gateway is a sundial. And one man writing many, many years ago, over 120 years ago, wrote that there is a beautiful Portuguese sundial on top of the Portuguese gate. उसके बाद हर आदमी ने वही लिखा. It became ingrained that this was a Portuguese sundial. ये sundial पोर्चुगीजों ने बनाया क्योंकि पोर्चुगीज गेट के ऊपर है. फिर एक दिन एक हाफ इंडियन हाफ पोर्चुगीज लड़का आया जो पोर्चुगीज आर्किटेक्चर पे काम कर रहा था और उसको भी कहा गया था कि ये पोर्चुगीज sundial है. तो उसने क्या किया कि वो पोर्चुगीज sundial की डिटेल फोटोग्राफ्स लिए और उसके ऊपर एक कोट ऑफ आर्म्स है. तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता इंडिया में सा कोट ऑफ आर्म्स रहेगा. इन यूरोप हेरिडिटरी इज अ वेरी बिग थिंग. तो उसने पोर्चुगीज हेरिडिटरी में चेक किया कि भाई ये किसका कोट ऑफ आर्म्स है, किसने ये बनाया था sundial. तो पोर्चुगीज हेरिडिटरी में उसको कुछ मिला ही नहीं. तो डेस्परेशन में उसने कहा कि ऐसे तो नहीं हो सकता है कि ये एक ब्रिटिश कोट ऑफ आर्म्स है. तो उसने ब्रिटिश हेरिडिटरी में चेक किया एंड ओ माय गॉड, इट वाज ए ब्रिटिश कोट ऑफ आर्म्स ऑफ अ ब्रिटिश फैमिली. And the sundial in all probability was therefore not a Portuguese sundial, but actually a British sundial. But everybody just kept copying without checking. So these things happen, Monal. It's not a crime as such. But when you find out otherwise, it's time to stand up and say, "ठीक है, भूल हो गए, we'll correct ourselves." True. This is something we can't do
most of us. We have a great problem of saying I was wrong. Why not? क्यों नहीं? अगर आपने गलती की तो बड़ी में बड़ी बात यह है आपकी गलती मानना, ये आपको और शान देता है, और शोभा देता है. Shows how large you can be. Yeah. So that's the way the food taboos are. So different food taboos work this way. And sometimes they are very detrimental moral to the health of people. Exactly. I think ये एस्पेक्ट जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है कि ब्लाइंडली जब हम फॉलो करते हैं, क्योंकि वो आया है फ्रॉम अ लिटिल इन्फॉर्मेशन. आई मीन लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग जैसे बोलते हैं. तो वो फिर उसके हेल्थ पर जब इम्पैक्ट होता है, एंड इवन सरप्राइजिंग बात ये है कि उसके बाद भी लोग या तो चेंज होना नहीं चाहते या उस चीज को देखना नहीं चाहते कि उसके वजह से हो सकता है. नहीं, ये सच बात है. हमारे एक मित्र हैं, वो मिडिल हिमालयस में उनका एक छोटा सा एनजीओ है, और वो डॉक्टर्स लेके आते हैं वहाँ, क्योंकि वहाँ 20,000 लोगों के लिए एक डॉक्टर है. अच्छा. ओके. तो वो डॉक्टर भी बेचारा क्या करे, यू नो, ही इज मोर कंसर्न्ड अबाउट किसका पैर टूटा, किसका कोई सीरियस प्रॉब्लम है. बिल्कुल. तो छोटे मोटे हेल्थ केयर वगैरह के प्रॉब्लम्स उसको देखने को टाइम ही नहीं मिलता. सो ही स्टार्टेड कॉलिंग अप डॉक्टर्स टू से कि आप 1 महीना 2 महीना यहाँ आके हमारे लोगों को मदद करो. You know, there has been a great rise in very, well, I should like to call it Hinduistic fervor. And good for people, why not? I mean, to each their own, right? So people have started coming, लोग आ रहे हैं कुमाऊं के पहाड़ों में, गढ़वाल के पहाड़ों में, और बड़े बड़े सत्संग हो रहे हैं. वहाँ इन विलेज के लोगों को कहा जाता है कि आपके लाइफ में ये बदलाव लेके आइए, चेंजेस लेके आइए, whatever. Well meaning people. तो आपको वेजिटेरियन होना चाहिए, क्योंकि आप लोग यहाँ इतना मांस वगैरह खाते हैं, उसके वजह से आप स्पिरिचुअली एडवांस नहीं होते हैं. ठीक है, वो उनकी बिलीफ है. वो एक दिन एक औरत को लेके आए, वर्चुअली कैरी करके लेके आए, ऑर्डिनरी टेस्ट जो कर सकते हैं छोटे से फर्स्ट हेल्थ केयर सेंटर में हो रही थी. उनका हेमोग्लोबिन 4 था. ओह माय गॉड. वो डॉक्टर ने कहा कि उसको अभी का अभी आयन चढ़ाओ, शी इज अ वॉकिंग हार्ट अटैक. तो they found many cases like this. तो थोड़ा इन्वेस्टिगेशन किया, तो ऐसा हुआ कि ये लोग जो बचपन से ठंडी के मौसम में उनके पास मंडुआ होता था, मतलब जो रागी कहते हैं वो, उनके पास राजमा होता था, और उनके जो भेड़ बकरियां होती थी वो होती. तो 6 महीने साल में वही खाते थे, हाई एल्टीट्यूड में रहते थे. दिस डाइट वाज टेकिंग केयर ऑफ देयर रिक्वायरमेंट्स. जब उन्होंने सडनली वो मीट निकाल दिया उनके डाइट में से, उनका मेन सोर्स ऑफ हेमोग्लोबिन चले गया. आपने उनको वेजिटेरियन होने को बोला, वो ठीक है, आपकी फेथ है, आपकी बिलीफ है, नथिंग रॉन्ग विद दैट. बट आपने उनको ये नहीं कहा कि उसकी जगह में क्या खाना चाहिए. You did not tell them what to substitute it with, because you were only interested in the life and death situation of animals. You were not understanding the nutritional aspect. So I am not saying that vegetarian is better or non-vegetarian is better or whatever. Each their own choice. खाओ और खाने दो. Eat and let eat. That should be the way we are. Exactly. And I mean, that's the way we were. Variety is the spice of life. All of that. So, you know, and if you want to, that is your choice. You have the freedom. It's in the constitution, right? So, sadly, peer pressure was driving people to vegetarianism without the correct options of what to have. So, you know, regularly I hear people say stupid things like, oh, I'm vegetarian, I get all my protein from dal. Dal is a complex carbohydrate. Dal has fiber. Carbohydrate first, fiber second, kahin dur it has protein. It has more protein than rice or gehu. कोई doubt ही नहीं है. But how much? You know, for a purely vegetarian diet to get its daily requirement of protein, you need to eat a minimum 200 grams of paneer every day. Unless you are eating a vast variety of green leafy vegetables, sprouted vegetables, वगैरह, the easiest way is to eat 200 grams of paneer a day. How many people can afford 200 grams of paneer? Naturally not. 200 grams of paneer is what, about 70-80 rupees per person in the family per day. वो तो नाइंसाफी है ना for a poor person. So we have to understand these realities. It's very easy to preach to people. You don't have to live their lives. Exactly. और इतनी सारी इंट्रिकसीज हैं जो ब्लेटेंटली इग्नोर हो जाती हैं.
एंड जो मिस इन्फॉर्म्ड है वो तो आउट ऑफ फियर या आउट ऑफ थिंकिंग के आई एम एलिवेटिंग माई सेल्फ उस पाथ पे चलते हैं और उनको कुछ रियलाइजेशन नहीं होता है कि कितना नुकसान कर सकता है. सच बात है. आई स्टिल रिमेम्बर मेनी इयर्स अगो जब मैं नया नया कॉलेज में था, तो देयर वाज अ टॉक शो एंड द होस्ट सेड कि यू नो वी शुड ये क्रिकेट में हम लोग हार रहे हैं, उसका कारण ये है कि देयर इज नो लेवल प्लेइंग फील्ड बिटवीन नेशंस. आई थॉट दैट वाज अ वेरी गुड sentiment. So no, the diet of all players should be same. I said very good idea, bhai sahab. But implement which diet will you choose? No, which diet will you choose? First of all, yes. Diet of British players, diet of South African players, diet of Pakistani players, diet of Sri Lankan players, diet of Indian players. Which diet will you choose? So his whole statement was no, Indian diet is the best diet. And everybody should eat Indian diet. So I said, basically, that is bias. बिल्कुल. See, we are all biased. It's okay, but we have to realize that we are biased. हमें ये जानना चाहिए कि हाँ, हम biased है. अगर आप ये पहले समझ जाए, तो automatically वो bias को आप नजर रखते हुए बाकी चीजें करेंगे. I think that's a wonderful thing you said. You know, the realization कि हम bias हैं, I think वो ही सबसे पहले बहुत important है. तो हम हमारे बायसेस को एटलीस्ट देख तो पाएंगे, हम देख ही नहीं पाते हैं. बहुत सच है. मैंने सुना है कि न्यूट्रिशनल साइंस लाइक जैसे आपने अभी आयुर्वेद का बताया कि आयुर्वेद, देन देयर इज चाइनीज मेडिसिन, प्लांट मेडिसिन, मतलब ये फूड रेगुलेशन पर इम्पोर्टेंस देते थे. सो न्यूट्रिशनल साइंस एज पर मेडिसिन इज स्टिल अ यंग साइंस, से अनलाइक फिजिक्स. तो ये जो सिस्टम्स थे, इनका बिलीफ्स पर बेस है या नॉलेज पर? इनका प्रैक्टिकल्स पे बेस था. अच्छा. तो वो ऑब्जर्व करते थे और कलेक्ट करते थे डेटा और उसके ऊपर बेस था. तो ऐसा है ना कि 9 out of 10 times they are not wrong. Okay. But 1 out of 10 times they can be spectacularly wrong. And जो अच्छा न्यूट्रिशनिस्ट है ना, दोनों साइड से देख के फिर प्रोसीड करता है. Okay. अगर आप चाइना जाएंगे, चाइना के कौन से भी बड़ी हॉस्पिटल में जब आप एंट्री करेंगे तो आपको पूछा जाएगा कि आपको एलोपैथिक साइड जाना है या आपको चाइनीज मेडिसिन जाना है. Okay. So the option is there. And they have cultivated that option. हमारे वहां क्या है, एक वेद दूसरे वेद से बात नहीं करता है. कोई भी स्ट्रीमलाइन नहीं किया है प्रोसेस. एक वैद्य कहेगा कि आपको ये प्रॉब्लम है और आप ये लीजिए, आपको फायदा होगा. दूसरा वेद अलग सी चीज बोलेगा, अलग से मेडिसिन देगा और आपको फायदा होगा. See what they are doing is they are bringing your vata pitta kapha in order according to themselves. So आपको फायदा हो सकता है, बट आपको मालूम नहीं है कि वो एक्टिव इंग्रेडिएंट क्या है इसमें, जिससे आपको फायदा होगा. तो इसके बारे में रिसर्च करना हो रहा है, ऐसे नहीं है कि नहीं हो रहा है, मगर वो बहुत स्लोली हो रहा है क्योंकि द ट्रेडिशनल आयुर्वेदिस्ट इज अपोजिंग दिस. ओके. ऐसे हमारी रोजी रोटी चले जाएगी, हमारे पेट पे लात मारेंगे, ऑल आयुर्वेदा इज सेम. अरे ऐसे नहीं होता है. ऑल एलोपैथी माइट बी सेम, आई मीन इट इजंट, बट इट माइट बी, बट दैट डज नॉट मीन दैट एलोपैथिक डॉक्टर के पेट पे लात पड़ रही है. फॉर एग्जांपल जो डायबिटीज होता है, आप अगर ऑनेस्टली कोई भी वैद्य से बात करेंगे तो वो आपको कहेगा कि आयुर्वेदा हैज नो आंसर फॉर डायबिटीज. अच्छा. बिकॉज आयुर्वेदा डिड नॉट अंडरस्टैंड डायबिटीज क्यों होता है. अच्छा. ये जो तुम्हारे आइल्स ऑफ लैंगरहैंस होते हैं पैनक्रियास में, और वो आपका जो इंसुलिन बनाते हैं और वो डैमेज हो जाते हैं, ये आपको मॉडर्न मेडिसिन ही बता सकता है, मॉडर्न बायोकेमिस्ट्री. और वो डेवलप हुआ है, ऐसे नहीं कि वो भी एक दिन में आ गया अचानक से. या so you know that is why we understand that we need to give insulin to people. मेटफॉर्मिन देना पड़ेगा या डायरेक्टली इंसुलिन का इंजेक्शन लेना पड़ेगा, तो ही आपका शुगर बैलेंस में आएगा, अदरवाइज इट विल किल यू. एंड सो मेनी ऑफ आवर एंसेस्टर्स डाइड. You know, juvenile diabetes today we are seeing is a very big thing. Yes. लोग डर रहे हैं उससे. उसका कारण इतना ही है, and I'm going to be very blunt in saying this. Most children with juvenile diabetes 200 years ago died young. So they had no chance to send the genes to the next generation.
So it was only adult onset diabetes that you had to worry about. अच्छा. Because by then most people had their babies. In fact, most women would get, diabetes during pregnancy. Yes. It would manifest at that time. Gestational diabetes. And that sadly is very difficult to shake off. It can be done. It's not impossible in most cases. But it's very difficult. Full-time mother, running the kitchen, taking care of the baby, you have an elder baby or a younger baby or whatever. That kind of thing. Arey, kya karegi ladki? And today's day and age of a nuclear family, it becomes very difficult. True. What if you have a job? 6 months bhi mila tumhe, which is a miracle if you get 6 months maternity leave. You have to go back, no? The family needs you to earn. बच्चे को क्रैश में रखा, ये किया वो किया, यहाँ भागा दौड़ी की. And sadly, let's be very honest about this. This is India. Women are expected to get up in the morning, make chai, make breakfast, pack dabba, send everybody off, and then go to work. Then come back from work and do the same thing again. Not to mention, leave enough food behind for elder parents, वगैरह. And men say we are working so hard, so we don't cook. लॉकडाउन में सब लेवल हो गया, सब का सब. झाड़ू पोछा करो अगर खाना नहीं पका रहे हो. It was such a teacher. हाँ, totally. So there are things that we can learn from the lockdown. We managed. It's not impossible. घर का झाड़ू पोछा लगाने को 15 मिनट लगती है. हाँ. Today you have wonder mop and whatever and फटाफट होता है. See, when you needed your own convenience, you got wonder mop. नहीं तो भाई को बोला पोछा लगाओ नीचे घुटने टेक के. बराबर. Today भाई also tells you when a new boy joins the house, मैं झुक के पोछा नहीं लगाऊंगी. You have to live with it. And today, having done it yourself, you are like, नहीं. हाँ, ठीक है. Actually, when you see, you do things or experience things from someone else's perspective, तभी आपको समझ आता है. So, how many people realize कि वो भाई सब vegetable काट के जाती थी? That made it possible for the woman of the house to cook all this. हाँ. It's a simple thing like that, but it's such a big thing. Reality ऐसी ही है, reality is reality not... slaps you in the face, Mona. Yes. वो कुछ आके नहीं करती है, ये तमाचा मार के जाती है reality. सही बात. उसके लिए वो reality है. True. अच्छा, कुछ religions में food offerings देते हैं gods को, भोग and प्रसाद, या फिर fasting करते हैं special days पर, या specific dishes religious information के basis पर खाई जाती है. तो इन practices ने हमारी food journey को कैसे inform किया है? Okay, so there is no religion in the world, Mona, which does not feast. And almost no religion in the world which does not fast. अच्छा. So feasting or fasting na are two sides of same coin. Right. एक ही सिक्के की दो बाजू है, feasting और fasting. Fasting करते हो for your spiritual well-being and feasting करते हो for your personal physical well-being. Right. तो अभी भाई अगर हम कहे कि हम गॉड के लिए feasting कर रहे हैं तो थोड़ा हमें गिल्ट कम लगेगा. तो प्रसाद होना चाहिए ना. जब आप फास्ट करते हो, मैं महाराष्ट्र से हूँ, महाराष्ट्र में फास्टिंग के डे को तो ज्यादा खाते. एक्चुअली ऐसा हो गया. ऐसा हो गया क्योंकि रूल क्या था कि जो आप रेगुलरली खाते हो वो आप नहीं खाएंगे. लेकिन इतनी चीजें इंट्रोड्यूस हो गई, आलू इंट्रोड्यूस हो गया, तो ये हमारा ट्रेडिशनल फूड नहीं है तो ये खा सकते हैं. साबूदाना इंट्रोड्यूस हो गया, ये भी खा सकते हैं. So instead of being a day when you really fasted and thought about yourself and God and all of those things, good or bad or whatever, this became a चलो मजा करो. वो भी feast में कन्वर्ट हो गया. Other thing you have to realize, Monal, is कि जो विलेज पॉपुलेशंस होते हैं वो सेलिब्रेट करने के बहुत सारे अवसर नहीं मिलते. शादी ब्याह को छोड़ के उनके पास ज्यादा अवसर नहीं होते सेलिब्रेट करने. वो रोज का रोज वही अनाज खाते हैं. Most villagers will eat the same meal every day for 360 days of the year. बिल्कुल. वो 5 days रहेंगे जब वो कुछ अलग खाएंगे. तो for them it is a great treat. Right. दिवाली के लिए औरतें सब साथ में आती है और दिवाली का मिश्रण वगैरह बनाते हैं, मिष्ठान वगैरह बनाते हैं. The reason for this is so that किसी का फैमिली थोड़ा डाउन है इस साल इकोनॉमिक, तो उसे भी कुछ अच्छा मिलेगा घर लेके जाने. I remember doing research on this and realized that in Maharashtra, laddus were only eaten at 2 times. अच्छा. दिवाली और अगर कोई प्रेग्नेंट होगा घर. ओके. इसको मेथी के लड्डू हैं. तो वो गोंद के लड्डू, मेथी के लड्डू आते थे. मेथी because it is very good for lactation.
तो बच्चे भी थोड़ा सा तोड़ के गपागप। हाँ, अभी तो गोंद मेथी के लड्डू एक साथ बनते हैं, which I really hate because I miss my गोंद के लड्डू, but whatever। तो बेसन के लड्डू है, रवे के लड्डू है, ये बनते थे सिर्फ दिवाली के लिए, so that the family had something nice for those few days to eat. So the idea of feasting was limited. Today, with a growing middle class and availability of cash money, तो हम सोचते कि भाई हमें भी अच्छा अच्छा रोज खाना है, नॉट रियलाइजिंग कि अच्छा अच्छा अगर आप रोज खाएंगे तो उसकी भी भरपाई करनी पड़ेगी आपको। बिल्कुल। तो सेलिब्रेटरी बिरयानी बनती है, वो बात अलग है, और तो हर रोज फोन करके बोलते हेलो A1 बिरयानी, 2 चिकन बिरयानी, 2 वेज बिरयानी, 1 मटन बिरयानी भेज दो। बिल्कुल। Yes. सेवई बनती थी in all Muslim houses. Sevai would be made and batawed. You know, you would very often as a good Muslim, you would not keep any of your own sevai for yourself. अच्छा। Because you know घर पे आने वाली है, औरों के घर से दूसरा से आएगी। Or you would go to all your Hindu friends because sevai was purely vegetarian, and you would distribute sevai. So as a child, as a Parsi child growing up in Bombay, तो क्रिसमस को क्रिसमस गुडीज आते थे, ईद हुई तो सेवई आती थी, you know, small things like this, पूरन पोली आती थी, विदाउट फेल मकर संक्रांति के लड्डू तो 2-3 जगह से आने ही आने थे, you know, that kind of thing, and society shared with each other. The cultural exchange was enormous. Sadly, I see that changing in the last 10 to 15 years. Yes, there is a us and them now, and you know, it is very difficult to put the egg back into the shell. Once you crack this egg of communal harmony, you have to only decide कि भाई वो हाफ फ्राई बनेगा या ऑमलेट बनेगी या भुर्जी बनेगी. There is no egg again. Okay? So I keep telling people, you must think before using communal disharmony for your own personal and political needs. It's not a good thing. कुरुश, मुझे थोड़ा सा प्लांट मेडिसिन की भी बात करनी है, बिकॉज ये कहीं ना कहीं रिलीजन से कनेक्टेड है. जैसे कई रिलीजियस सेक्ट्स और कुछ फेथ्स में साइकेडेलिक सब्सटेंसेस जैसे भांग या कैनबिस, ayahuasca, मैजिक मशरूम्स, ये सब यूज़ किए जाते थे कॉन्शियसनेस को एक्सपैंड करने के लिए और शायद मेंटल हेल्थ में हेल्प करने के लिए भी. बट देयर वुड बी प्रॉपर रिचुअल्स अराउंड देम, ऐसे ही नहीं यूज़ होते थे. हम सब ने देखा है कि कैसे जब ये मेन स्ट्रीम में आए तो ये मिसयूज हुए. सो क्या बिना रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट के बैकड्रॉप के हम इजीली पोटेंट फूड्स को मिसयूज करने लगते हैं? तो ऐसा है ना कि ऑल ऑफ दीज फूड्स वर ए कंट्रोल्ड सब्सटेंसेस, दे वर कंट्रोल्ड बाय सोसाइटी इटसेल्फ. बी बात ये है कि ये सिर्फ साइकेडेलिक एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस वर नॉट कंज्यूम्ड ओनली फॉर स्पिरिचुअलिटी. अच्छा. इन मेनी केसेस दे वर कंज्यूम्ड बाय ओल्डर पीपल. रूमेटिज्म, आर्थराइटिस, आप पूरी जिंदगी आप खेत में काम करते हो, बुढ़ापे में तकलीफें होती है, शाम को दोस्तों के साथ 1-2 चिलम लगा दी, थोड़ा आराम होता है. सही बात है. Yes. So a lot of the curative properties of these things we forgot. Young boys did not smoke ganja and hashish. Older people did. Right. So अमल का जो पानी होता है जो पूरे राजस्थान में दिया जाता है, which is basically हफीम का पानी. Okay. Okay, which is given as prasad. It is so dilute कि आपको एक बोतल पीनी पड़ेगी तो get high. Then it is given out as prasad. But जो भोपा होता है, मंदिर का जो पुजारी होता है, he will have a very strong dose. For him, he is communing with the gods. That is the psychedelic experience for him. It is not an experience of joy or pleasure. It is an experience of communion with supposedly something bigger than you. Yeah, it's transcendental for him. So these are two aspects which we forgot. And the nashe ka aspect has become big. See, if something is prohibited, other people want to do it. Yes, human tendency. I had a bar in my house which was always open. I had no great urge to drink alcohol when I was growing up. Because if I wanted to, I could ask my father for a drink and sit down with him and drink it. I had friends of mine who would get drunk out of their brains outside, and then you know would wash their faces and eat 4 halls of sweets so that they would go home not smelling of alcohol. And I couldn't understand it because it was a taboo to them. And you know, then as a child, automatically taboos are meant to be broken. So the British did a lot of terrible things about psychotropic substances. Okay. Ganja was no big deal. Charas was no big deal in India. And even Hafim was no big deal in India.
Yes. by making them prohibited Hmm. and by bringing this mystique about it, Hmm. okay, that did more damage than anything else. Right. उनको इतना lucrative बना दिया. See, we have to understand something. At that time, at least the government got something out of it. Hmm. अभी तो ये underground चले गया, smuggling हो गया. Then of course, developing it into drugs led to, for again, morphine was developed as a pain medicine for the war effort. It became heroin and things like that. So you know, the offshoots, cocaine was chewing of coca leaves with tuna, which was done by porters in high altitude. Because they're getting less oxygen, they're using the coca leaf and the minute amounts of cocaine that they get to expand their alveoli, etc., and to breathe better at high. It takes a lot of leaves to get high. Okay, but when you can take those leaves, process them chemically, and make a substance which takes out the good part and the good part into, again, inverted commas, but that is a problem. So I don't know if you've ever done any research on this. Smoking ganja is less harmful to you than smoking tobacco. Yes. I'm aware of that. Tobacco is acceptable. Ganja is not. Such an irony. Number 2, do you know what the side effect of consuming opium is? अफीम जो होती है, अगर आप खाते हैं उसे नशे के लिए, तो उसका साइड इफेक्ट क्या है? नहीं. उसका एक ही साइड इफेक्ट, माइल्ड कॉन्स्टिपेशन. अच्छा. Opium has no other side effect. Okay. Unless you're abusing it and being stoned all the time and somebody runs over you, that's a different thing. So opium, ingesting of opium only led to mild constipation. This is a fact. I'm not telling people to have opium. Please don't get that idea. What I'm trying to say is, it was again something that rickshaw pullers, mazdoors who did manual labor, शाम को थोड़ा सा हफीम ले लिया, थोड़ी आराम, you know, tired at the end of a bad day, physical labor, back-breaking work. So it was more medicinal than anything else. I think context बहुत important है. So we ruined the context by making it psychedelic substances and psychotropic substances act. Khalas. You know, by making it illegal, by making it punishable, we sent it underground, and then you had the entire underworld pushing it, and it changed forever. I think ये बॉक्स कर देते ना चीजों को in black and white, rather than realizing के ग्रे एरियाज कौन से हैं उसके, और उनको थोड़ा सा इंटेलिजेंटली हैंडल करें, तभी ये सब दिक्कत आती है. आपको मालूम है मोनल जी, जो ट्राइबल एरियाज होते हैं सेंट्रल इंडिया के, वहाँ जो महुआ का पेड़ होता है उसे कल्पवृक्ष माना जाता है. तो महुआ के जो फ्रूट्स होते हैं जिसका दारू बनता है वो कभी तोड़े नहीं जाते, जो नीचे गिरते वही यूज किए जाते हैं. उसका तेल बनाते हैं, उसके सीड्स का, उसकी जो फ्रूट होती है उसको ड्राई करते हैं और जैसे किशमिश होती है वैसे करते हैं, उसका गुड़ बनता है. तो in all aspects of tribal life, this is a critically important thing. Yes, they also make alcohol out of it. British को सिर्फ alcohol दिखा. There was a plan to cut down all the mahua trees in India. अच्छा. And the making of alcohol was proscribed, और ये और वो और वगैरह. So you know, when you keep pushing people into a corner, then the rebellion is to make more and more alcohol and sell it to people. हाँ. ये तो होता ही है. Those are cons. You know, it has taken 75 years after independence for mahua to be bottled legally. Today there are 2 bottlings that come out of Madhya Pradesh. It has now got a special tag of heritage liquor. Acha, how nice. And there is one gentleman, very interesting gentleman called Desmond G, who bottles a mahua liqueur in Peninsular India. He was the first, and he has been fighting, why are we making it difficult? Instead of removing these taboos and all of them, and making it mainstream, and even the government benefits. Why are we going into this trend? So you win some, lose some. I mean, I'm not going to be pro or anti. I'll be very honest. I drink once in a while with my friends. I'm a social drinker. I don't see any harm in it. But yes, excessive alcohol consumption is a terrible idea. It's suicide. Slow suicide. Painful suicide. Yes, true. But to each their own. See, anything can be bad. Why? Adhi chammach chini 3 times a day in your chai is not so bad as sitting with, 1 block of sugar and eating 1 kilo sugar every day. वही बात है, वो ब्लैक एंड व्हाइट वाली बात है कि हमने कुछ चीजों को लेबल कर दिया है कि दिस मीन्स इट्स अ बिग क्रॉस. जैसे
if we see in today's times, like there are a variety of modern food practices and schools of thought. कोई vegan है, कोई raw food believer है, कुछ लोग hunter gatherer food choices adopt करते हैं, then local, and some believe in functional nutrition. फिर एक तरफ से environment का भी concern है कि हमारे food का direct relation है food choices का. और मैंने recently biodiversity footprint के बारे में भी सुना, जिससे हमारी इडली, चना मसाला, चिकन जलफ्रेजी, everything is creating a bad impact on the environment. Nonsense. So are these turning into the new religion of food? So, okay, what you have to understand here is, and I'll do this in English because I'll be a little easier to do this. Mm-hmm. What you have to understand is this. Dissing somebody else's food is very easy. Okay? Without going into the food journeys and understanding the nutritional needs of the people and how that food serves a purpose. Mm-hmm. In India, for most Indians, veg, non-veg, whatever. See, 77% of Indians are non-vegetarian. This is Government of India data. Exactly. Not Kurush Dalal data. Yes, okay? yes. That does not mean everybody gets up in the morning and cuts a goat. Mm. So meat is eaten, non-veg food is eaten in small quantities unless you live on the coast where you have access to a lot of seafood. Mm. That also is not eaten, you eat kilos and kilos of it every day. Mm. So there has to be balance. You can't take more from the environment, than you give back to it. Mm. There has to be balance. Now, all of these food movements that are there, and good for whoever does whatever. And like I said, I firmly believe कि खाओ और खाने दो. Mm. As long as you are not shoving your dogma down my throat, I don't give a damn. Right. But what is happening is there is this whole thing about spiritual activism, a pseudo-spiritual activism of, we are destroying the environment. Mm-hmm. Nobody wants to answer the real problem. Nobody wants to talk about the real problem. The real problem is simply one of overpopulation. Yes. When we were purely hunter-gatherers 18,000 years ago, the population of the earth, according to paleodemographics, was around 12 million individuals. Mm-hmm. There are 23 million in Bombay. To give you an example. You can just compare. So you can just see the load on the planet. So yes. Because our populations grew, we shifted towards growing our own food. That's a story by itself. Yes, true. But we learned how to be better and better and grow more and more food. We chose to grow carbohydrates because it's the only thing that you can grow once a year, will stay for the whole year, will feed your family, and there will be enough to sow the next year. So we switched to a carbohydrate diet. Today our diet is a carbohydrate diet. Everything that we eat is to make the primary carbohydrate go down. जब हम दाल खाते हैं राइस के साथ, वो सिर्फ वो राइस को पचाने के लिए खाते हैं. ओके. कि वो सिर्फ राइस अगर खाना पड़ा तो वो गले नहीं उतरेगा. इडली के ऊपर पोड़ी नहीं डाली, चटनी नहीं रखी, वो इडली भी नहीं जाएगी गले में. So these are things that you have to understand, that there are certain choices that we have made and we have to live with them. Everybody would like a better food choice. Everybody would like food that was fabulous, fantastic, and would turn everybody into Superman. But it's not happening. And the more our populations are growing, the more difficult it is to feed them. Yes. It's very easy to blame the government and say, government क्या कर रही है? अरे government क्या करेगी? तुम क्या कर रहे हो? So educated people have fewer children usually as a norm. If we really spread higher education in a big way, we will probably able to bend the curve. I regularly hear India का ये greatest है, India इसमें number one है, all kinds of rubbish. But the number one thing that nobody is celebrating is that we are the number one in world population just now. Not a good number one to be. True. How are we going to feed our people? Less and less people are becoming farmers. Farmers are desperate, and we are ignoring our farmers. See, we eat their surplus food. Please remember that. Yes. का जो एक्स्ट्रा बनता है ना, जो एक घर के लिए बनने से ज्यादा जो होता है, वो हमें बेचते हैं और हम खाते हैं. हम फूड प्रोड्यूस नहीं करते, हम पैरासाइट हैं. तो पैसे देके फूड लेते हैं. अगर आज हमें कहा गया कि तुम जाओ अपना खाना बनाओ, मर जाएंगे पहले. क्योंकि 90 दिन के लिए क्या करेंगे? 90-120 दिन जो लगेंगे अनाज बनाने को, उसमें हम क्या? So we don't realize these things and we treat our farmers the worst possible. Nobody wants to farm. Farmer अपने बेटे को कहता है, भाई तू पढ़ लिख के तो आगे जा, तू लिफ्टमैन बन, तू वॉचमैन बन, वो परोड़ेगा तेरे को. यहाँ मर जाएगा यहाँ खेती में. So we are losing our farming populations, and
our cities are becoming larger and larger. By 2050, we believe that 55% of India will be urban population. That's quite a large number. Who's going to farm for us? Who's going to feed us? And everybody wants food cheap. Nobody wants to pay more. This is such bad. You don't want to pay more taxes. You don't want to pay higher costs. Nobody wants to do that. Why should the farmer suffer? Just so that you are happy, the farmer should suffer. We need to ask hard questions to ourselves. True. Something which just isn't in our, maybe it's at the periphery, लेकिन हमारे स्कोप में कभी आता ही नहीं है. मैं मेरे सब स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि जो ट्रांसप्लांटेशन ऑफ राइस होता है, पैडी को जब भी हम ट्रांसप्लांट करते हैं, तो 2 दिन जाके सिर्फ काम करके आओ. हाँ, सब पता चल जाएगा. सिर्फ 2 दिन. उसके बाद तुम एक कण चावल भी तुम्हारे प्लेट में वेस्ट नहीं करोगे. जब तुम्हें समझ पड़ेगा कि क्या कष्ट होता है वो चावल उगाने में. बिल्कुल. Very true. On that note, should we call it a day, Monal? Yes. Thank you, Kurush. It's been quite long. This has been really a mind-expanding session. और हम अपने खाने के थ्रू कितना कुछ एक्सपीरियंस करते हैं, ये आज एकदम रियलाइज हुआ. एंड ऑल्सो ऑन दिस पार्टिंग नोट, मैं थोड़ा ये कहना चाहती हूँ कि फूड इज़ अ बिग पार्ट ऑफ सेल्फ एक्सप्रेशन. हम अपनी चॉइसेस, लाइक्स, डिसलाइक्स, नीड्स, डिज़ायर्स, पेन, प्राइड, हमारा कल्चर, हमारा लाइफ ऑफ आइडिया एक्सप्रेस करते हैं खाने से. इसलिए हर घर का खाना सेम रेसिपी होने पर भी अलग फ्लेवर देता है. I would say gustation serves the same purpose as art or poetry. True. So I would say that respect your own food and respect others' food and their food choices. And just in fact of, like not liking these differences and this variety, in fact, उसको celebrate करें. कि अच्छा है, अगर सभी वेजिटेरियन होते तो क्या होता, अगर सभी नॉन वेजिटेरियन होते तो क्या होता, अगर सभी वीगन होते तो क्या होता, अगर सभी फिश ही खा रहे होते तो क्या होता, ओवर फिशिंग हो जाती. अगर सब इतने अलग अलग हैं, so that is, I think, the true beauty of life. True, very true. On a parting note, Monal, what I'd like to say is, number one, I'm always a great advocate of eat and let eat. खाओ और खाओ. Secondly, हमारे पास tolerance होना चाहिए. बिल्कुल. Just because हम ऐसा नहीं करते, ऐसा नहीं हो सकता कि अलग लोग ऐसा नहीं कर सकते. और when you share food, you will truly appreciate other people. बिल्कुल. And you don't kill people at whose table you sit and eat. Yes. Because it builds a bond. Yes. This is what I experienced myself as well when I'd moved to Dubai. Before we got our apartment, हम एक फिलिपिनो फैमिली के साथ शेयर कर रहे थे for a few days. And it was the first time कि मेरे किचन में फिश भी कुक हो रहा था. And it expanded my mind so much. मुझे realize हुआ, that lady, we became friends. And she used to ask me a few things, that how can I dress better? My husband wants me to look a certain way, be a certain way. I realized that everyone has the same needs, the same emotions underneath. हम कैसे वो differences से पूरे time judge करते रहते हैं एक दूसरे को. We are all human. Yes. We forget that, that we are all one collective race. Completely. And just one last thing, Kurush, the Fab 5 round, like 5 questions, 1 word or 1 sentence answers. Yeah, so ready? Ready. आज तक का सबसे weird but tasty dish आपने क्या खाया है? Stir-fried silkworm larvae. Oh. कोई एक type of ancient food जिसका mainstream में comeback होना चाहिए? Millets. Yes, definitely. Animal meat versus lab meat versus plant meat. किसका future आपको bright दिख रहा है? Plant meat is not meat, number one. B, it is more expensive than any other kind of meat. I honestly think that if we can make lab meat cheaper and cleaner and we have no loss of life, then it's a fabulous idea. Right. अगर आपको एक डेजर्टेड आइलैंड पर सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट्स का अनलिमिटेड सप्लाई मिले तो आप कौन से इंग्रेडिएंट्स ले जाएंगे? Cheese, bread. Am I allowed to call for things like bread or must I say? Yes, anything, yes. Bread, cheese and bacon.
नाइस। आपकी लाइफ की वो कौन सी फूड मेमोरी है जो आप अपनी आखिरी सांस तक याद करेंगे? जब मैं छोटा था और नानी के घर जाता था हॉलीडेज में, तो कचरा वचरा खा के पेट खराब हो जाता था, तो नानी हमारे लिए हमेशा स्टूड एप्पल्स बनाती थी। अच्छा। पील्ड स्लाइस्ड एप्पल्स को थोड़े से शुगर, थोड़े लाइम जूस, थोड़ा सा टच सिनेमन शायद होगा, टच, और हो सके तो थोड़े किशमिश साथ में पकते थे, बहुत ही स्लोली, एक वात वाले चूल्हे पे। अच्छा। ना वो जो व्हाट इज वात? विक स्टोव, केरोसिन का जो विक वाला स्टोव, बहुत स्लो कुकिंग करता है। तो वो इतना अच्छा लगता था कि कभी कभी हम झूठ कहते थे नानी को कि हमारा पेट ठीक नहीं है, ताकि वो हमारे लिए स्टूड एप्पल्स बनाए। बहुत ही सिंपल चीज है, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी गुरमे डिश नहीं है, मगर ये मैं मतलब दम तक याद रखूंगा। I think the simplest of memories are the most profound. True, very true. Thank you, Kurush. This was a lovely, lovely session, and thank you for obliging. Arey, my pleasure, ma'am. Chalo. All the best, and thank you, listeners. Thank you so much. इस एपिसोड को सुनने के लिए मैं आप सबको थैंक यू कहना चाहती हूँ। अगर इनमें से कुछ विचार आपको अपने से लगे, कहीं मन को छू गए, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम या फेसबुक पर। मेरे बारे में और जानना हो तो मेरी वेबसाइट पर आप देख सकते हैं। इन सब की डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन की गई हैं। आप जिस भी ऐप पर मुझे सुन रहे हैं उस पर मुझे 5 स्टार रेटिंग देना मत भूलिएगा। और अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगें तो मेरा शो सब्सक्राइब भी कीजिए। विजडम एक सागर की तरह है जिसमें जब जब हाथ डालो तब तब एक सुंदर मोती मिलता है, लेकिन उस मोती की चमक कोई एक के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए है। और इसे जितना शेयर करो उतना ही इस मोती की चमक बढ़ेगी। इसलिए मेरा पॉडकास्ट अपने आसपास, अपनी फैमिली, फ्रेंड्स, कलीग्स सबके साथ शेयर कीजिए और इस विस्परिंग की चेन को बढ़ाते चलिए। अगर करनी हो जीवन को समझने की कुछ बातें तो करते रहिए मुलाकातें।